Hello dear students, good morning, Jai Shri Krishna. Myself Raju sir and I heartily welcomes to you in my today's lecture. Now I am going to teach you some electronic effects which are very responsible for organic reactions. It means if we want to know about the organic reaction mechanism, then we have to know about the responsible factors for it. And there are some electronic effects which are responsible for the organic reaction mechanisms, right? So how many electronic effects which are very responsible for organic reaction mechanism? So they are inductive effect, hyperconjugation, resonance effect and electromeric effect. So we have to discuss in our lecture these main four electronic effects. So today I am going to teach you first electronic effect, and that is inductive effect. So now first of all, what is inductive effect? Before starting this topic, I can explain this topic by using special example, right? So now we start with the proper example. Suppose we use chloromethane. So dear students, you can see here, this is chloromethane, in which carbon and chlorine both are connected with each other by the covalent bond. And in the formation of covalent bond, both of these element, it means carbon and chlorine, share one electron to form this covalent bond. So I can draw here two electrons for this covalent bond. So these electrons are known as bonding electron pair, but we have to know about the electronegativities of carbon and chlorine. You can see both of these elements, it means carbon of methyl functional group and chlorine, both of these elements are heteroatoms. Heteroatoms, it means both of these elements are differ from each other, and electronegativity of both of these elements is different, because electronegativity of carbon is approx 2.5 Pauling, and halogen chlorine, electronegativity of chlorine is approx 3.0. Actually we can measure the electronegativity in different types of scales like Mulliken, Jaffe, Allred, Rochow and Pauling scale, Linus Pauling. But nowadays this is the main important scale, Pauling scale, to measure the electronegativity, right? Chlorine is higher electronegative species than carbon. You can see here there is some difference between electronegativity. So we can say chlorine is more electronegative. And what is electronegativity? The tendency of the attraction of bonding electron pair toward itself, it is electronegativity. And if any one species is more electronegative than another one, then the more electronegative species attract electron pair, bonding electron pair toward itself. Ready? So we can say this bond pair of electron will shift toward chlorine side due to higher electronegativity of chlorine. आप समझ सकते हो, क्लोरीन मिथाइल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. उसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो कार्बन से ज्यादा है. सो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड क्लोरीन साइड, we can write here CH3 single bond Cl. Due to displacement of electron, this electron pair will shifting toward chlorine side, and due to displacement of electron pair, this bond experiencing some stretching and bond length increase. And here you can see, due to higher electronegativity of chlorine, this chlorine attract electron pair from the bond, it means bond electron pair toward its chlorine side, and due to effect of electronic pair, due to effect of electron pair, electrodensity, it means density of electron increase on chlorine. It means negatively charged cloud of electron increase on chlorine because this electron pair is nearer to chlorine side. So due to this displacement, this halogen experiencing partial negative charge.
It means partial negative pole is formed here on chlorine due to higher electronegativity, due to attraction of electronic pair, and here this carbon experiencing partial positive charge because this bonding electron pairs going to far away from the carbon because of less electronegativity of carbon than chlorine. So you can see now this CH3 functional group experiencing partial positive charge and halogen Cl experiencing partial negative charge. So here you can see partial positive pole and partial negative pole is formed in this covalent bond. So due to this effect we can say this bond is known as polar bond. इसे पोलर बॉन्ड बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन. सो दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट. दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट. ड्यू टू दिस इंडक्टिव इफेक्ट this bond will become permanently polar bond. Due to this effect, this covalent bond becomes permanently polar bond. Be focused in this on this word permanently polar. It means we can say this inductive effect is permanent effect. And this electron pairs which are shifting toward more electronegative species, more electronegative atom, these electron pairs are sigma bonding electron pair. So we can say inductive effect is displacement of sigma electron pair. Inductive effect is permanent inductive effect because which induct the polarity in covalent bond. So this is the inductive effect, right? So now we can say this bond will become polar bond, and polar bond is weaker bond than non-polar bond. So what is electronegativity? Tendency of the attraction of electron toward itself, it is electronegativity. Now when two different species or atoms which are connected with covalent bond, then any one more electronegative species attract bonding electron pair toward itself and form partial negative charge on it, and the another fragment of this bond will experiencing partial positive charge. So this bond having two partial positive and partial negative poles, so this bond becomes polar bond. Bond length increase, bond becomes weak. So this bond is polar covalent bond. So we can say due to this effect this bond becomes polar, and this effect is known as inductive effect. So this is the definition for inductive effect. You can see the phenomena of withdrawing electrons. The phenomena of the withdrawing electrons. You can see here we withdraw the electron toward chlorine side. So phenomena of the withdrawing electrons through sigma bonds. Through sigma bonds, not from the pi bond. Through sigma bonds to the more electronegative atom. It means here this chlorine is more electronegative than carbon. So this chlorine withdraw the electron pair, bonding electron pair through the sigma bond. Ready? Or group, because chlorine is atom and also it is chloride group, functional group, is called an inductive effect. Ready? Due to inductive effect, polarity is induced on the carbon atom and on the substituent attached to it. It means polarity is formed on the carbon atom, and that is partial positive charge. Polarity, partial positive pole is formed on the carbon and partial negative pole on the halogen due to higher electronegativity. Suppose we use another example like CH3 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, Cl. So you can see there are two electrons. It means one electron pair is present in this bond, but halogen is more electronegative than carbon. You can see because here chlorine and here carbon. So in this covalent bond, these two bonding electron pairs are
shifting toward halogen side, chlorine side, due to higher electronegativity of chlorine. So this chlorine withdraw electrons from the less electronegative carbon. So due to this electron attraction effect, due to the negativity of this bond electrons, it means electron pair of this bond, this halogen experiencing partial negative charge and negative pole is formed on this halogen. But due to this effect, this carbon experiencing electrodeficiency, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि ये बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर चले जाते हैं. सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिविटी है, नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड है, वो मैक्सिमम कौन सी तरफ रहेगा? हेलोजन की तरफ. और ये नेगेटिव चार्ज क्लाउड की इफेक्ट कहां पे कम होगी? कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. So this carbon experiencing partial positive charge due to electrodeficiency, and this bond is become polar bond. This bond becomes polar bond due to inductive effect. Polar covalent bond, and this effect is permanent effect. जब तक ये बॉन्ड रहेगा तब तक यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा. ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रखेगा, उसके नजदीक ही रहेगा जब तक हम ये बॉन्ड तोड़ नहीं देते. परमानेंटली ये कंपाउंड में ये बॉन्ड तो पोलर ही रहेगा. इट मींस दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, right? And this bond is permanent polar bond, which is weaker bond. So we can break this bond easily. So this compound becomes more reactive, right? So we can say this inductive effect is responsible for the chemical reaction. Reactivity increased due to inductive effect. More inductive effect, more polarity is present in compound, and if more polar compound, it means bond length is higher, bond becomes very weaker. It means bond becomes weaker bond and we can break easily. Required quantity of heat to break polar bond is less, so we can easily react that type of compound. It means मैं आपको कह सकता हूं कि अगर बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है, बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, जितनी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगी समझ लेना उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा ही होगा. तो due to higher electronegativity difference, inductive effect is higher, and higher inductive effect, it means reactivity also increase for this bond because it becomes more polar, and with more polarity this bond will become weaker. But due to experiencing electrodeficiency on carbon, we can indicate here inductive effect by this way. By this sign we can indicate inductive effect. But now due to inductive effect, this carbon experiencing partial positive charge and this carbon experiencing electrodeficiency. अगर आपके पास से कोई 10,000 रुपए लेके चला गया तो आपके पास मनी की डेफिशिएंसी हो गई, तो आप क्या करोगे? आप अपने बाजू वाले के पास जाओगे और बोलोगे अरे यार मेरे पास पैसे खत्म हो गए, अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो क्या करेंगे? तो वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, मैं तुझे 2-3 हजार रुपए देता हूं, तेरे घर का खाने का राशन आ जाएगा. मतलब अगर मेरे पास मनी की डेफिशिएंसी जनरेट होती है ना, तो मैं अपने बाजू वाले को भी ठीक से रहने नहीं दूंगा और वहां पे भी मैं मनी की डेफिशिएंसी जनरेट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि उसके पास से मैं 2 या 3 हजार रुपए ले लेता हूं तो बाजू वाले पे भी मनी की डेफिशिएंसी होगी, मगर कम, क्योंकि मेरे पास से तो 10,000 रुपीज चले गए तो उसके पास से 3,000 रुपए चले गए, वो तो मैंने ले लिए. अभी उसके पास जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी इट मींस मनी की डेफिशिएंसी होती है तो उसके बगल वाले के पास से थोड़े ले लेंगे, शायद 1,000 रुपए ले लेगा, 1,000 रुपीज.
right? So now we can say due to inductive effect this carbon experiencing electron deficiency, and due to electron deficiency this inductive effect, it means this polarity transmit to the adjacent carbon by this sigma bond. But the inductive effect on this sigma bond, it means polarity in sigma bond is less than that of this bond, right? जितनी यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट है, जितनी यहां पे पोलैरिटी है, उतनी पोलैरिटी यहां पे नहीं मिलेगी। समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? रेडी? सो यू कैन ड्रॉ हियर दिस पोलैरिटी बाय यूजिंग दिस वे। यू कैन सी, यही साइन से आप समझ सकते हो कि यहां पोलैरिटी ज्यादा है, यहां कम है। एक्चुअली यहां पे पोलैरिटी होनी ही नहीं चाहिए थी, दोनों ही कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्चुअली आप देखोगे तो जीरो हो जाएगा। दोनों कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए ना। अभी मैंने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो ही इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी, मगर यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होने के बावजूद यहां पे आप देख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगी। मगर क्यों? रीजन इज दिस वन, ड्यू टू दिस इंडक्टिव इफेक्ट or this polarity transmit to the adjacent carbons but decrease, inductive effect decrease with increasing in distance. It means जैसे जैसे आप एक दूसरे मतलब दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन के ओर आप जाते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी, पोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी। सो यू कैन सी, वी कैन राइट हियर partial positive plus 2 delta which is less than that of plus 2 delta is less than that of plus delta. It means here bond polarity is less than that of this one, but due to the effect of the polarity, you can see polarity is also transmit to another adjacent carbon, but the polarity is also less than this one. So here partial positivity 3 times, which is also less than that 2 deltas plus delta, right? So with increasing in distance, with increasing in the number of carbon in chain, inductive effect and polarity decrease. Actually inductive effect transmit to adjacent carbons by sigma bonds, but with transmission of inductive effect, when we increase the distance, polarity decrease, and after 4 carbon, after 4th carbon inductive effect becomes 0. क्यों? Why? Because जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इंडक्टिव इफेक्ट कम होती जाती है। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाएगी, उसकी इफेक्ट कम होगी। आपके पास से 10,000 रुपए कोई लेके चला गया तो आपके बाजू वाले के पास से आपने 3,000 रुपए ले लिए, क्योंकि आपको भी घर चलाना था। आपके बाजू वाले ने उसके बाजू वालों के पास से 1,000 रुपए ले लिए, तो वहां पे 1,000 की ही दिक्कत होगी ना। तो वो क्या करेगा, उसके बाजू वाले के पास से 300 रुपए लेगा। वहां पे 300 रुपए खपत हो गया तो वो क्या बोलेगा, 300 रुपए है कि नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उसके बाजू वाले से पास से नहीं लूंगा। समझ सकते हो? ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो कम होती जाएगी। Ready? So this inductive effect decrease with increasing the number of carbon, and after the 4th carbon inductive effect becomes 0. This is the inductive effect, right? So we can say due to inductive effect, you can see this effect is permanent effect, is only because of electronegativity difference between two atoms which are connected with each other by covalent bonds. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो ही आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट? नेक्स्ट, दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिट अप टू 4 कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड से ही आगे जाएगा। कोरोना की तरह है, एक दूसरे को छूते हो तो कोरोना आगे बढ़ेगा, मगर चौथे कार्बन के बाद ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आगे बढ़ेगी। कोरोना नहीं समझता, वो तो चौथे कार्बन के, चौथे इंसान के बाद नहीं, जितने भी आप छूते हो सब में कोरोना आगे बढ़ता है। इससे अच्छा तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, चौथे कार्बन के बाद खत्म। Ready? So this effect is transmit up to 4 carbon by sigma bonds, and inductive effect decrease with increasing the distance. And after 4th carbon, we can write here, after 4th carbon, I effect becomes 0. Okay. So ये सब जोल जाल है जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। एक्चुअली
वो क्यों होती है कंपाउंड में? मेन रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर कोई कोई दो एलिमेंट्स को आप जोड़ देते हो सिग्मा बॉन्ड से, अगर आप कोई दो एलिमेंट्स को जोड़ देते हो सिग्मा बॉन्ड से और दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इंडक्टिव इफेक्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी। रेडी? automatically develops inductive effect between two elements which are connected with covalent bond, in which more electronegative element attract electron bonding electron pairs toward itself and experiencing partial negative charge, and another species or another fragment of that covalent bond is experiencing partial positive charge, and that bond becomes polar, and it means inductive effect is inductive effect is generated. Now we can classify this inductive effect into two different parts: negative inductive effect and positive inductive effect. एक्चुअली ये जो खेल है ना पूरा, वो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन पे ही खड़ा है। इलेक्ट्रॉन को कितने आप खींच सकते हो, आपकी टेंडेंसी कितनी है, उस पे ही ये इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। सो वी कैन क्लासिफाई this inductive effect into two different parts: positive inductive effect and negative inductive effect on the basis of tendency of the attraction of electron with respect to hydrogen. Ready? चलो बच्चों, अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट को अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आप देख सकते हो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा वाला पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट मींस वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट, बट हाउ? Actually, inductive effect is based on the attraction of electron, right? So, the hydrogen element, which one is least electron donor and also least electron withdrawing atom. It means hydrogen cannot easily attract electron or donate electron, right? So, we can say hydrogen is least electron donor or least electron gainer atom. So on the basis of hydrogen we can assume that the electron attractive tendency or electron gaining tendency of the hydrogen is zero. ये आपको दिमाग में सिर्फ रखना है। रेडी? आपको assume करना है, right? So we can assume the inductive effect is zero for hydrogen because we assume that the electron attractive tendency of hydrogen is zero. Ready? Because the electron attractive tendency and donation tendency of the hydrogen is least than another elements of a periodic table. So we can assume here inductive effect of hydrogen atom is zero. अभी आपको क्या करना है? With respect to hydrogen, we have to use standard hydrogen atom to consider the type of inductive effect. Alright? If any functional groups which are more electron attractive, listen carefully, some functional groups or atom which are more electron withdrawing functional groups than hydrogen, we assume the electron attraction tendency, it means electron withdrawing tendency of the hydrogen is zero. We assume that one. Right? And if any functional group which has more electron withdrawing tendency than hydrogen, then that type of functional groups are known as electron withdrawing functional group. It means which show the minus I effect. It means negative inductive effect. Right? Now, what is positive inductive effect? So the functional groups which have less electron withdrawing tendency than hydrogen, the functional groups which have less electron withdrawing tendency than hydrogen, then they are less electron attractive than hydrogen, so they are positive inductive effect containing functional groups. It means they show positive inductive effect. But actually that type of functional groups which show positive inductive effect, they are also known as electron donor. Electron donor. Why electron donor? Actually, this inductive effect is divided into two parts actually. Positive and negative inductive effect on the basis of the tendency of electron withdrawing function. Electron withdrawing. It means if electron withdrawing tendency of the functional group is less than that of hydrogen, that type of functional groups show positive inductive effect, and they are known as electron donor. Why? Because
electron withdrawing tendency of hydrogen is 0. Ready? Listen carefully. Electron withdrawing tendency of the hydrogen is 0. And I have some functional groups like this one. They have less electron withdrawing tendency than hydrogen, but actually tendency of the hydrogen is 0. Inductive effect of hydrogen is 0. So the another functional groups which have less electron attractive tendency than hydrogen, अभी हाइड्रोजन की ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी वो 0 है, तो दूसरे वाले उससे भी कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना मतलब उससे उल्टा हो जाना, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के बजाय वो डोनेट करेंगे, राइट? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दे बिकम्स इलेक्ट्रॉन डोनर इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनर. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर मैं एक दानवीर इंसान नहीं हूं, मगर आप सोचोगे कि राजू सर है वो कोई अलग अलग ट्रस्ट में सपोज मनी डोनेट करते, मैं दानवीर हूं. अभी कोई इंसान, अभी मुझे स्टैंडर्ड ले लेते हो और दूसरों की कैपेसिटी चेक करते हो कि दूसरे लोग कैसे दानवीर है. देखो, अभी मुझे आप स्टैंडर्ड में गिनते हो, अभी मैं क्या करता हूं, मैं जो हूं अभी कभी भी मैंने डोनेट ही कुछ नहीं किया, मतलब मैं दानवीर ही नहीं हूं. मेरी जो डोनेशन करने की टेंडेंसी है सपोज वो 0 है. अभी मुझसे कोई ज्यादा डोनेट करता है तो वो आप बोलोगे कि बहुत बड़ा दाता है, वो जो राजू सर से भी बड़ा दानवीर है. अभी राजू सर तो कुछ दान ही नहीं करते, उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी ही 0 है. अभी मुझसे कोई बड़ा दानवीर होगा जो ज्यादा रुपए देता होगा तो ठीक है, वो बड़ा दानवीर. अभी कोई इंसान आपको ऐसा भी मिलेगा, अरे यार ये तो राजू सर से कम दानवीर है, वो बहुत कम दान करता है, डोनेट बहुत कम करता है, वो कम दानवीर. अरे राजू सर से कम दानवीर है भाई. अभी वो राजू सर से कम डोनेट करता है, अभी राजू सर ही कुछ डोनेट नहीं करते, वो तो 0 है. राजू सर से कम दानवीर, अभी मैं खुद 0 तो वो तो भिखारी हुआ, देने की बात छोड़ो, ले लेगा. मतलब अगर मेरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी 0 है और अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो मुझसे भी कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है, तो उसका मतलब वो विड्रॉ करने की बात तो छोड़ो, वो डोनेट करेगा. रेडी? सो द फंक्शनल ग्रुप विच शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट मींस विच हैज less electron withdrawing tendency than hydrogen, because we assume the electron withdrawing tendency of the hydrogen is 0. So that functional group which show plus I effect, they are act as a electron donor functional groups, right? So you can see the functional group which are more electron withdrawing functional group than hydrogen, then they show minus I effect. They are also known as electron withdrawing groups. Now another point, positive inductive effect. The functional group which are less electron withdrawing than hydrogen, atom, then they show plus I effect. But actually electron withdrawing tendency of hydrogen is 0. So they are electron donor, they never attract electron. Ready? They never becomes electron withdrawing functional group, they always becomes electron donor functional group. So these are the functional groups which can donate electron. They are act as a positive inductive effect containing compound. It means they show plus I effect, they are electron donor. It means मिथाइल, you can see, अगर आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी के बारे में आप सोचते हो तो हाइड्रोजन से ये कम अट्रैक्ट करेगा, इससे भी कम अट्रैक्शन इसका होगा. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूं. इथाइल, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्काइल फंक्शनल ग्रुप है. प्राइमरी अल्काइल, दिस इज द प्राइमरी अल्काइल. व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद अनदर वन कार्बन. दिस वन इज सेकेंडरी अल्काइल because this carbon is connected with another 2 carbon. This one is tertiary alkyl. Primary alkyl is less electron attractive than methyl. Secondary alkyl is less electron attractive than primary alkyl. Tertiary alkyl is less electron attractive than secondary alkyl. आप बोलोगे सर आप ऐसा बोल रहे हो कि less electron attractive, less electron attractive, less electron attractive. आप निशानी तो देखो less than लिखी हुई है. बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी लिखी है प्लस आई इफेक्ट. व्हेन वी मूव मिथाइल टू टर्शरी अल्काइल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी डिक्रीज. when we moving methyl to tertiary alkyl, electron withdrawing tendency decrease, but all of these functional groups having less electron withdrawing tendency than hydrogen, so they are electron donor. It means less
electron withdrawing tendency, it means more electron donor tendency. So when we move methyl to tertiary alkyl, electron withdrawing tendency decrease, but electron donation tendency increase, and electron donation property is plus I effect. Ready? So you can see this is the increasing order of positive inductive effect. It means you can see electron donor effect. Methyl is less electron donor than primary alkyl. Primary alkyl is more electron donor than methyl because it is less electron withdrawing than methyl, right? ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है मिथाइल से, इसलिए इजीली डोनेट कर सकता है. Then after secondary, then after tertiary, electron withdrawing tendency decrease, electron donation tendency increase. So this is the increasing order of plus I effect. Now all of these functional groups are more electron withdrawing functional group than hydrogen. It means the tendency of the withdrawing electron is more than that of hydrogen. So this type of functional group show plus minus I effect. It means they are electron withdrawing functional group. All of these functional group have more electron withdrawing tendency than hydrogen, right? Remember that thing. So this is the decreasing order. This is the decreasing order. You can see here. This is the decreasing order of minus I effect. This is the decreasing order of minus I effect. First one is trifluoroammonium ion. Which one is more withdrawing functional group, electron withdrawing functional group, which show highest minus I effect? And when we moving trialkyl ammonium ion, nitrocyanide, sulfonic acid SO3H, CHO aldehyde, CO ketone, COOH, it means acid, carboxylic acid, amide, halogen, OR means alkoxy, it means ether, hydroxy means alcohol, amine, C6H5 means phenyl, phenyl ring. आप ऐसे भी लिख सकते हो phenyl ring को. We can write by this way. This is the phenyl ring C6H5. Ready? And especially for this halogen, we can write here fluorine is more electron withdrawing than chlorine. Chlorine is more electron withdrawing than bromine, and bromine is more electron withdrawing than iodine. We can explain in detail by using this fluorine, chlorine, bromine, iodine. When we move fluoride to iodide, minus I effect decrease. You have to remember this sequence. आपको ये याद ही रखना होगा. तो उसके लिए मैंने आपको कोड दिया है, वो आपको याद रखना है. देखो, नफीजा नाराज नहीं है नोटी कैटरीना और सलमान से. सुनो, नफीजा नाराज नहीं है, नफीजा नाराज नहीं नोटी साइना और सलमान से. साइना, कैटरीना, यू कैन यूज एनीवन. एक काम करते हैं, कैटरीना ही लिखते, मजा आएगा बच्चों को. कैटरीना. नफीजा नाराज नहीं है कैटरीना और सलमान से. कहो कौन एसिड और एमाइड को हिला के, कहो कौन एसिड और एमाइन को हिला के ईथर और अल्कोहल, ईथर और अल्कोहल को अम्मा पे फेंकेगा, अम्मा पे फेंकेगा. चलो रेडी. यू कैन सी हियर नफीजा नाराज, नफीजा NF3, नाराज, नफीजा नाराज, नाराज मीन्स NR3 प्लस, नाराज नहीं, नहीं NH3 एमोनियम आयन, नहीं नोटी NO2, नोटी नाइट्रो, नोटी कैटरीना CN, कैटरीना, ये आपको याद रह जाएगा, कैटरीना. और सलमान से, सलमान SO3H, SO3H for sulfonyl functional group, we use here सलमान word, right? So नफीजा नाराज नहीं नोटी कैटरीना और सलमान से. कहो कौन एसिड और एमाइड को हिला के, कहो कौन एसिड और एमाइड को हिला के. कहो, कहो मीन CHO aldehyde, कौन, कौन CO, कौन सफिक्स ऑन फॉर कीटोन एंड को CO कीटोन. कौन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड और एमाइड, एमाइड मीन CONH2. कहो कौन एसिड और एमाइड को हिला के, हिला के हेलोजन.
को नो मीन को है वो यही लिखा है क्योंकि ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है वो पूरा करने के लिए। सो हेलोजन हिला के फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, राइट, हिला के ईथर और अल्कोहल, ईथर और अल्कोहल को अम्मा पे फेंकेगा। अम्मा मीन्स एमिनो फंक्शनल ग्रुप एमाइन, एंड पे फेंकेगा, फेंकेगा मीन्स फिनाइल, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। रेडी? नफीजा नाराज नहीं नोटी कैटरीना और सलमान से, कहो कौन एसिड और एमाइड को हिला के ईथर और अल्कोहल को अम्मा पे फेंकेगा, राइट। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। So these are the two types of I effect, positive inductive effect and negative inductive effect. Ready? And you have to remember it. चलो बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।